Communication skills has got 6 C's. I'm sure you all are aware. So, whatever you speak must be very clear, must be very crisp. So, make sure कि आपका मैसेज बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर हुआ हो और उसमें क्लैरिटी होना ज़रूरी है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है, मतलब कम शब्दों का उपयोग कीजिए। On the other hand, there are places, there are like uh, situations where people are going to invite you to speak. So at that time, please don't consider that because they are looking for content. They have invited you to speak on the podium. So at that time, you should have enough content to share with them and make sure that the message is absolutely clear. तो जो भी आपका स्पीच ऑब्जेक्टिव है उसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन जैसा मैंने बताया कि दिस इज़ द स्केलेटन, द toughest of all the things that we do under soft skills. It's not only because you have to be persistent, but I believe एक तो ये 100% परफेक्ट होता ही नहीं है. It is never 100% perfect. So never think that whatever you are trying to communicate will reach the audience 100%. They will always be कितनी भी कोशिश कर लें, 2.5 या 5.5 या 1 पॉइंट समथिंग, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है अंडरस्टैंडिंग में, बिकॉज हर इंसान की अपनी परसेप्शन होती है, अपना वे होता है अंडरस्टैंड करने का, मैसेज को परसीव करने का। तो इसीलिए कम्युनिकेट करते रहना चाहिए, परसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैसेज must be clear, it should be concise, but that doesn't mean that you don't have much to speak. Rather, you should have enough content. If people have invited you to speak for maybe just 5 hours, you should have content for at least 20 hours. Why? Because when we start, we need to understand the audience. तो कहीं ना कहीं हम एडिट करना पड़ता है, कहीं ना कहीं फिल्टर करना पड़ता है। तो अगर आपके पास कंटेंट अच्छा होगा, ज़्यादा होगा, रिच होगा, तो आपके लिए उसको फिल्टर करने में, सॉर्ट आउट करने में और मैसेज को स्ट्रक्चर करने में आसान रहेगा। So that is why I say there is a lot to learn in communication skills. So keep learning, keep rocking, and as I always say, try to be as honest as possible because honesty is the best policy. That reminds me, you can also do public speaking activities while taking up a module on communication skills. It helps not only in engagement but also for you to observe the candidates, also for you to give them a detailed feedback. Because when you will be sharing with them the feedback, तब आप वो सब यूज़ कर सकते हैं, उन्होंने एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कैसे बोला, आप कोटेशंस दे सकते हैं, आप अलग अलग वेज यूज़ करिए, अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करिए। So keep rocking, keep smiling and keep inspiring.